So, friends, we have done walking meditation and we have seen how powerful this meditation is. Okay, so we will be doing the meditation again today. So, why do we do walking meditation? Meenakshi, are you in a position to share your experience? How was your experience last time? দেখ ক্যামেরা অন করতে হবে রে। না ক্যামেরা ছাড়াই বলো। আমার চোখের অবস্থা ভালো না, ওই অ্যালার্জিটা এখনো যায়নি পুরোপুরি। ওকে ওকে তো হুম ঠিক আছে। So, let it be, Meenakshi. Don't worry. Don't need to share today. Get well, and then we will talk again. So, I was waiting for my cousin. She hasn't joined yet because it is my cousin and my brother-in-law who will be doing walking meditation for the first time today. So, I have already shared that, we have to really any thought that I need to manifest, that needs to be magnetized with emotions. Without emotions, it doesn't work. Okay. लेकिन ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हम मेडिटेशन में इमोशनली उस थॉट के साथ रहते हैं, बट जब निकल आते हैं फिर हम अपने लाइफ में चले जाते हैं, सेम ओल्ड लाइफ, सेम ओल्ड पेन, सेम ओल्ड challenges, and we forget what we were dreaming about. Hmm? And there is this book, some Tobraze I was reading. I forgot the author's name. Manage Your Emotions. Hmm? वहां पे वो लोग बोलते हैं कि देयर हैज बीन अ रिसर्च डन कि हम जैसा लाइक बोलते कि देयर इज अ रिसर्च डन वेयर दे से वेयर दिस ऑथर सेज that let me just mute it. Okay, let me 1 second also stop the video. Okay, so yeah, this ये इस ऑथर ने ये रिसर्च किया कि जब हम लाइक हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो हमारे इमोशंस को डिटरमाइन करता है. Okay, I was waiting for you, Mampi. Join in time. I was worrying that you'll miss the initial, No, no, I'm really explanation. sorry. Actually, I was busy cooking for my husband breakfast. Yeah, yeah, no problem, no problem. Yeah. Yeah, you can start. So, Yeah. yeah. So, what there was this research done by, some scientist, and this author, he has written it in his book called Manage Your Emotions. I think the name of the book is, where he says that हमारे इमोशंस ना हमारे बॉडी पोस्चर के साथ चेंज होता है. हम्म बोल रहे कि अगर देखा गया है रिसर्च में कि हम जितना ऐसे स्लाउचिंग पोजीशन में अगर बैठते रहते हैं, आप देखो थोड़ा टाइम ऐसे पोजीशन में आप रहो, एक एक टाइम के बाद ना यू विल फील वेरी डिप्रेस्ड. Okay, just stay there for like this, and you'll see after some time you'll start feeling depressed. Hmm? When we stand like this, even if we are not feeling confident, but if we walk like this and we stand like this or sit like this, after a certain point of time my body will start emitting the vibration to the mind, and it will give my mind the confidence. Okay, सो दैट्स वाई हम मेडिटेशन तो करते हैं, निकलने के बाद फिर से पता नहीं क्या होगा, हमारा बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, हम खाना बनाने के टाइम में अगर डिप्रेस्ड है तो स्लाउचिंग हो जाएगा, हम ऐसे करके करेंगे. अंडर कॉन्फिडेंस, दिस इज अ पोस्चर ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस. ओके, लो कॉन्फिडेंस. एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे ग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ वेयर आई बिलीव दैट आई कैन चेंज माई लाइफ. It's not possible. Okay, meditation may we are visualization, the visualization will work, but it will take a very long time just when we are meditating and visualizing, and then after meditation we forget, हम भूल जाते हैं और हम normal life में depressed होके बैठ के
बिता देते हैं. But what Dr. Joe Dispenza says, and this man also, he has shown some experiments. These are scientific experiments. They say that आप जो बनना चाहते हो ना, वो पहले से आप अपने बॉडी पोस्चर में ले आओ, अपने फीलिंग्स में ले आओ, अपने एवरीडे एक्टिंग में ले आओ. इवन इफ यू आर नॉट दैट, स्टार्ट एक्टिंग. फेक इट टिल यू मेक इट बोलते हैं ना. फेक इट, अपने आप को एक्टिंग ही सही. कुछ कुछ जगह में स्पेशली जब आप दूसरों के सामने एक्टिंग करते हो, वो सही एक्टिंग नहीं है, वो फेक है. हम कितना मास्क लगाते हैं, राइट, दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए. वो मास्क लगाना इज अ सफरिंग. बट व्हेन वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, देन a mask is very important sometimes to how I how a confident, how a healthy person will work. If I, as for example, मैं अगर हेल्थ के लिए अपना मैं कुछ मांग रही हूँ, तो आई शुड स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग एज इफ आई एम ऑलरेडी हेल्दी. ऐसा नहीं कि मैं जब हेल्दी हूंगा तब मैं जीवन में इतना खुश हूंगा, तब मैं स्ट्रांग फील करूंगा, तब मैं ऐसे वॉक करूंगा, तब तब तब. नो, नॉट तब. क्वांटम साइंस, द साइंस ऑफ न्यूटोनियन वे वाज ऑलवेज लाइक, जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा. Newtonian way is always like that. I will act on it. I will do it. When I will get it, I will be happy. But quantum physics is an, why quantum? इसलिए इसको quantum leap क्यों बोलते हैं? It's not like a slow growth like a sloth. Quantum science is totally opposite. बोले पहले अपने आप को वैसा ढाल दो, फील करो तुम बन गए हो वैसा. And then when you start feeling it, it will show it in your life. Okay, whether if you want to become abundant and rich and a very luxurious person, start walking and talking like that, feeling like that. If you want to become a very very good and pious person, I would not say pious is then again a moral word, a good human being, a better human being, start feeling that you are a light. You are already emitting light. You are a light person of love and light. Okay, if you want to feel that, okay, I am a very confident person or I am a very wise person, start walking and talking as if you are already wise. आप already wise हो ऐसा सोच लो. हेल्थ के लिए भी वैसा, कि अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, आपके माइंड में प्रॉब्लम, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, उसको सोचो नहीं. आप सोचो कि ऑलरेडी आप पूरे पूरे हेल्दी हो गए हो. वो सोच के साथ आप वॉक करो. Okay, that's what this walking meditation is. That's why it's so powerful, friends. Walking meditation once in a while we should be doing, even if there is no music. घर पे भी जब वॉक कर रहे हो, टॉक कर रहे हो ना, सोचो कि आप वैसा आदमी बन गए हो. आप हैप्पी, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो जीवन में, मत सोचो कि मुझे कब हैप्पीनेस मिलेगा, मैं कब इधर घूमने जाऊंगा या ये करूंगा या ये शॉपिंग करूंगा तब जाके मुझे हैप्पी फील होगा, कब मेरे पास इतने पैसे आएंगे तब मैं हैप्पी फील करूंगा. नहीं, this is again a Newtonian way. But the quantum way is that I will start faking as if I'm already happy. How will a happy person, he will never slouch. हैप्पी पर्सन कभी डिप्रेस्ड होके ऐसे नहीं रहता है, वो हमेशा ऐसा रहता है, स्माइल रहता है. I remember one of my first mentor, Dr. Daisaku Ikeda, Buddhist mentor's wife, Kaneko Ikeda. She used to say that, you do not smile when you are happy. You smile to become happy. Okay? इसको समझ में आया? ये बोल रहे हैं कि हम स्माइल हैप्पी होने के बाद नहीं करते हैं, हम स्माइल करते हैं ताकि हम हैप्पी हो पाए. क्योंकि when I start smiling, I start acting I'm happy, I will naturally and gradually really become happy in life. Okay, so that's what it's so important, friends, to really really understand this concept. Because the body na, we are trying to send emotions, but the body sometimes doesn't understand till it is acting on it. When it starts believing, it starts feeling that. Okay, friends? So, Dr. Joe Dispenza also talks about the same thing. You start acting as if you are that. I remember, Priyanka Chopra. Priyanka Chopra said, you know her life, right? In Bengalis, for Bengalis, I don't know about other culture, but for us,
dark and dusky come together. At least for myself, I never heard that I was ugly because I was dusky. In fact, from childhood, I was told I'm beautiful. Okay. But when you go to other cultures, you will see that, ये तो काली है, ये तो काली है बोलते रहते हैं, right? Even in South also, so much of, all these things, only these fair heroines are given importance, and all these things, all this darkness and whiteness, it comes. So Priyanka Chopra was also, told कि ये तो काली है, ये क्या करेगी जीवन में, इसका तो कुछ नहीं होगा. Okay. But when you hear her story, I don't know what a human being she is, but she's beautiful manifest. She says that you fake it. वो बोल रही कि मेरे पास confidence में, when she moved from India to Hollywood, a big jump, right? India में उसको कोई काम नहीं दे रहा था. एक टाइम आया जहाँ पे nobody was giving her work. Everybody thought her career is over. Okay. And then from scratch, she started in Hollywood. Okay. She went and gave auditions in Hollywood. छोटा छोटा audition उसने सोचो, फिर से उसने उसको फिर से scratch से उसको start करना पड़ा. Hollywood में जाके audition देना पड़ा. Okay. But what her mantra was that she said that I will fake it till I make it. And उसको she used to feel very underconfident जब वो जाती थी. If you listen to her interview, वो बोलती थी कि मुझे ना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था, डर लगता था ना, नया एनवायरनमेंट है एंड एवरीथिंग. अगेन आई स्टार्टेड फेकिंग दैट आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, walk and talk like a very confident person. Slowly her body started absorbing and understanding that she's a very confident person. Friends, you will hear experiences. Meenakshi and Ruchi were sharing last time how powerful these walking meditations are. Ruchi and Meenakshi were sharing experiences last time ke, Ruchi was sharing, Didi, मैं एक टाइम के बाद walk करते करते dance करने लगी, because Joe Dispenza's word is so amazing, it inspires you. ये आपको इंस्पायर करेगा वैसे वॉक करने के लिए. सो फॉलो इट, गिव योर ऑल व्हेन यू आर वॉकिंग. ओके. एंड शी वाज सेइंग दैट शी वाज twirling means already Ruchi was in trance. That's why she was twirling when she was walking. So this ये meditation इतना powerful है. So don't take meditations as अरे ये तो नॉर्मल मेडिटेशन जैसा नहीं है. मेडिटेशन सिर्फ बैठो, सिर्फ ब्रेथ करो, बस हो जाएगा. you know there are so many ways of the universe. I am a Sagittarius Lagna. Some people, you also want variety, right? You don't want to get bored. That's why walking meditation is also important कि हमेशा हम bored नहीं feel करना चाहते. At the same time, unlimited power भी चाहते हैं. कौन सा भी meditation हो, we need unlimited power. My mentor, Dr. Newton, he's an amazing mentor. What can I tell you about him? I am at awe. Like वो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूं. Okay. And he has, he has such scientific techniques, कितना कुछ techniques and everything, because he's continuously learning. He's a person of learning. Or he's a Sagittarius people, they get bored very easily. बोर्ड वेरी इजीली का एक गुडनेस क्या है कि दे विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग ऑल द टाइम. इट्स नॉट दैट कि हमको कर्तव्य करना है मेडिटेशन में इसलिए हम कर्तव्य करते हैं. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट्स बिकॉज लेट्स ब्रिंग वेराइटी सो दैट मेडिटेशन भी हमारे लिए बोरिंग ना लगे. एवरी डे मेडिटेशन कुछ दूसरा हो सकता है, राइट? Why to, if there are so many beautiful ways of meditating and finding, unlimited power, why to go into just one way? Let's find different ways and enjoy. And same, my Lagna is also Sagittarius. I'm like almost like Dr. Newton. I get bored very easily. So that's why, मैं जैसे हमेशा I try to find new ways of meditating and make my life always interesting. That's why I also try to make your life also interesting. Do new things every day. At the same time, find unlimited power of the universe, whatever you are doing. Right, friends? So Dr. Joe Dispenza's this meditation here, I will play the music. You just listen to the music, stay outside. He will ask you, it is a batch of first. He will ask you to stand. Standing meditation है. Standing के time में आप stand भी कर सकते हो, कहीं पे बैठ भी सकते हो, जहाँ पे आप सिर्फ आपको बोलेंगे, आप सुनोगे eyes close करके किसी भी जगह पे. फिर उसके बाद आप फिर walk करोगे. वो बोलेंगे walk walk walk. Again for some time you will walk. Again then he will say stop. फिर then you will stop. And again he will ask you to listen. Close your eyes and sit somewhere or stand somewhere and listen.
And again, after that, he will ask you to walk. So whatever he's guiding, do it. It's a batch of standing meditation or sitting meditation and walk. And again, standing meditation, sitting meditation and walk. Okay. Follow it completely. Give your all, because it's a very powerful meditation, friends. It can, like yesterday's meditation, कल का meditation के जैसा, ये भी आपके life को बहुत transform कर सकता है. Because जितना आप body में emotionally feel करोगे ना उसको, ही विल मेक यू, वो आपको फोर्स करेंगे इमोशनली फील करने के लिए कि फील करो, यू आर दैट, यू आर दिस, फील इट. जितने इंटेंसिटी के साथ आप फील कर पाओगे पाओगे, जस्ट फील इट. ओके, ओके, लेट्स गिव आवर बेस्ट, लेट्स स्टार्ट.